थोड़ा बहुत अभी, ठीक है। उसके बाद फिर एक्चुअली को डीप देखने क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं। ठीक है। आई थिंक पहले क्या था कि एक आई थिंक उसने रोहित ने शेयर किया था सिस्टम डिजाइन का, तो उसी की बेसिस में प्रॉब्लम सॉल्व करते करते हम डीप में जाएंगे कंपोनेंट्स में। That's how I will start. ठीक है, तो ठीक। प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो रोहित ने शेयर किया था कि सेल्फ सर्व प्लेटफॉर्म इज अ प्रोडक्ट ऑन कुबरनेट्स। तो सिनेरियो क्या था, द प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि 20 डिफरेंट इंजीनियरिंग टीम्स है, एमएल टीम्स है, देन दे रेज अ गियर टिकेट, इनको कुबरनेट्स क्लस्टर चाहिए, कंप्यूट पावर चाहिए कंटेनर डिप्लॉय करने के लिए। तो उनकी जो कंस्ट्रेंट्स है, we operate on AWS, Azure Kubernetes पे करते हैं, अदर ऑन प्रीम भी यूज सकते हैं। एंड देन उसके कंस्ट्रेंट्स हैं कि डिफरेंट टीम ए कैन नॉट एक्सेस अदर टीम की पॉलिसी डेटा। फिर उसके बाद जो भी जेडी का जो भी क्या क्या उसके एक्सपेक्टेशंस, तो इसको एक डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देन वी विल स्टार्ट हाउ डू गो ईच कंपोनेंट इंटरेक्ट विद ईच। तो स्क्रीन दिख रही है क्या? अभी नहीं। ये अभी आनी थी स्क्रीन नॉट हाँ एक मिनट, मैंने एक्चुअली फंक्शन नहीं रिस्टार्ट किया, इवन ना या ठीक है। हाँ हाँ विजिबल है, इसको थोड़ा सा वो कर लेना, जूम कर लेना। हाँ मैं एक मिनट डॉक्यूमेंट शेयर किया था। तो थोड़ा सर की वॉइस भी बहुत क्लियर नहीं है, आई डोंट नो हाँ, सिर्फ मेरे साथ है या हाँ बोलने थोड़ा का वॉइस में तरीका भी ऐसा ही है, तो मैं कंफ्यूज हूँ। इट्स माइक और पंकज। हाँ शेयर डॉक्यूमेंट शेयर किया था ना।
डॉक्यूमेंट का लिंक डाल दो इसमें चैट में ही, तुम मीट चैट में। हाँ उसी में ही है। उसी में है। एक बार कोई और डाल दो, या मेरे को तो नहीं मिला है ना। कौन सा ये जो अभी शेयर कर रहे हो पंकज, इसका बोल रहे हो या ये? आई थिंक इट इज योर वर्ड, इट इज नॉट योर पोस्ट। नो आई डोंट नो, इसका लिंक तो नहीं आया। एक बार और डाल दो मीट चैट में पंकज। हाँ मैं तो डाल रहा हूँ। स्क्रीन देखिए मेरी क्या? हाँ हाँ। तो ये रोहित ने शेयर किया था, सिस्टम डिजाइन क्वेश्चन कैटेगराइजेशन। तो एक प्रॉब्लम थी उसमें, सेल्फ सर्व प्लेटफॉर्म सर्विस ऑन कुबरनेट्स। तो इस सिनेरियो को लेते हुए हम विल स्टार्ट डीप डाइव इन कुबरनेट्स। हाउ डज वी design a Kubernetes platform? How does it being consumed by different applications or different compute requirement? Scenarios में ये है कि different teams हैं, they require a compute clusters, which is maybe on AKS or GCP or SZ or can be on-prem. So how does we design that platform for a Kubernetes 20%? तो इसमें different teams हैं और different teams का data नहीं देखना चाहिए. And we want to limit the cost per team. How do we evaluate the KD? What things we look at the customers? ये एक problem statement है. Then how do we move forward in the deep dive on the software? So आप next year accordingly. पंकज चैट में लिंक शेयर कर दो दोनों का, अपने डिजाइन का भी और इसका। हाँ हेलो हाँ स्क्रीन दिख रही बट योर वॉइस इज नॉट क्लियर। अभी सही है? ना नहीं सर, वॉइस बहुत लो है। बहुत फीबल है। अभी सही है? अब सही है ना? हाँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हम देख लिया था कि एक प्लेटफॉर्म Kubernetes स्पेसिफिक डिजाइन करना है. देन हाउ डू वी make sure that namespace cannot interact with other namespaces and other stuffs. How do we categorize that Kubernetes clusters to provide the availability, observabilities and all those stuff. So एक design है इसका. So there are different components. One is the SRE team or the platform engineering team, and there is application teams which would be deploying their containers on. पंकज बिफोर डिस्कशन ना, पहले डॉक्यूमेंट का लिंक नहीं मिलेगा तब तक। एक्चुअली इसने शेयर किया व्हाट्सएप पे, इस पे डाल दो, इस चैट पे डाल दो। व्हाट्सएप पे कैसे खोलें यार? व्हाट्सएप पे तो दो जगह हो जाएगा मेरे को। इस पे मीट चैट पे डाल दो पंकज, इज वेरी सिंपल। एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ, मैं बता देता हूँ क्या करना है। आई थिंक इज नॉट क्लियर। ठीक है? नहीं यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ये जो चैट है ना, गूगल मीट का चैट। हाँ नाउ आई गॉट इट। हाँ ठीक है? या मैन, थैंक यू, थैंक्स। इसमें जो आप पढ़ा रहे हो वो भी डॉक्यूमेंट है या दो अलग डॉक्यूमेंट है? बस इतना और दो डॉक्यूमेंट है। एक सिस्टम डिजाइन है जो मैंने व्हाट्सएप पे डाल दिया, और ये वाला है शायद शेयर नहीं हो. ठीक है, अभी ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि हाउ डज यू गेट अ सेल्फ सर्विस फॉर द namespace. Like a developer comes in that I need a namespace for my cluster. तो एक बैक स्टेज एक
development portal hai. It's a product which is developed by Spotify and given to CNCF. So this is standard now. So initially, when this was not there, every organization used to make a self-service portal to provide a way that developers can say that I need an IDP portal where I can request a namespace for a particular clusters. तो उसके लिए backstage एक product आया था, as a product which was developed by Spotify and is being handed over to CNCF. CNCF is an authority which manages all the Kubernetes administration, all the governance part of things. So we'll go deep into Backstage a bit later on, but just to know that Backstage is an IDP portal, internal development platform portals, where you can host your offerings of your products. What are the different offerings? What are the different API which you can call? So a developer would go soon Backstage development portal, which will provide you different self-service actions, service catalogs, cost dashboard, and all those stuff. So once it goes over here, then there are two management clusters, like two clusters in Kubernetes we're designing it up. One is the management cluster, which would manage all your clusters where the application team will host up. So let's say there are 100 of your clusters, and you want a certain namespace to in these clusters. So you will route it to that clusters based on from management clusters. So why we are having a management clusters over here? It's a question like, why do you need a management cluster? So when you have hundreds and thousands of clusters, very large scale setup of Kubernetes, so you require a consistency of way of configurations and all those stuff. So the deployments of any components in clusters, I will go on the each component cluster, can be controlled with this management governance layer. All your policies, whichever the policies are required. So we keep this management clusters for the SRE teams. Like it's a platform level product, which as an application team you may not be interacting with, but this is how most of the large scale setups of Kubernetes works out. So we have a management cluster. In different cloud providers, this comes as fleet managers, and there are some on-prem kind of stuff, open cluster management, which provides you a way that you can manage your cluster provisioning, your operators deploying on the clusters with this management layer. So it has Argo CD, Flux. So these are like the GitOps principle in the Kubernetes world. So which deploys all your operators on this on a shared clusters where applications will have the namespace per team. So this will help us to keep a governance and all your security policies with Kubernetes policy engines. So they are Kubernetes OPA Gatekeeper. OPA Gatekeeper is specific to Kubernetes world, but there are other OPA policies for any other components. And Kubernetes is very specific to Kubernetes. So it's a product build for the Kubernetes policies. We'll go into the policy a bit later on, but Kubernetes provides a YAML-based, very specific Kubernetes policies, which help us to make sure that you are running, controlling all the stuffs, and anything which you want to do it with respect to namespaces, which you get onboarded from this development application platform. And then you have different modules, something add-ons you will have to get installed and all those stuff. So anything you want to deploy on the shared clusters can be configured over here, and then GitOps can be used to push all your configurations from here to on this part of the cluster. And now there are some shared services which your SRE team or would be giving you as a platform as a product. Like if you say, let's say 100 clusters are there in your team, and each is managing their own stuff. So it's a pain like they would not be consistent across the organization. So a shared services and a SRE team of platform engineering team would provide all those operators, tested operators on this stuff. So like a FinOps cost tool. So there is a cube cost and open cost. This is by CNF. So this basically help us to know the cost namespace level. So there would be a namespace level onboarding of the development. And they would give you how many resources like CPU, memories are you using. They will pull the metrics with the help of the Prometheus and will provide you all your billing information. And then you can inject, there's some AppTO product
where you can inject all your data, and then you can get the cost in dollars and all those stuff, depending upon your chargeback, and then you can charge back to each namespace owner, like this stuff. So as of now, if you see in AKS or EKS world, you get charged back as a cluster, like, and then the platform team will charge back the same thing to the namespaces. So having a segregation of cost with the namespace helps them to know which namespace is using which how much resources, so they can charge back it the namespace owners on the stuff. And then you have secret manager. So let's say you have a central space where you store your secret, maybe a vault. Vault is the default one. But to get a secret in a Kubernetes cluster with namespace level segregations, so there is an external secret operator which is widely used in Kubernetes platform. It's an open source one. So basically, it has two components: secret store and cluster secret store. So cluster secret store is where you have secret at the cluster level, and application teams will have their namespaces, and they will secret have stored in the vault, and this would help us to fetch the secret at the runtime in their namespaces. So there will be segregation of secrets on their namespaces only. No other namespace would be able to see other secrets over there. So external secret operator is the main functioning body behind getting the secret from the vault at the runtime. And then based on which cloud providers you used, you have workload identity and all those stuff with respect to the cloud providers. So if you're using on-prem, the OpenShift comes with other stuffs to interact with other services, like your Kubernetes or pod needs to connect to a SQL database. How do you authenticate to that? So that's where the workload identity comes in. Or in Azure world, it is managed identity. So federated identity. I will go deep depending on the cloud providers, how you authenticate to your Kubernetes pod when you're calling to a database or any services outside from the Kubernetes. And then most services, this is observability stack. So this is Prometheus, Grafana, Loki, and Tempo. So most of the cloud providers now come with managed Prometheus. Otherwise, there is an open source Prometheus, and then you have to build a wrapper on top of it to make it highly available and all those stuff. So we'll go deep in the observability stack, but for now, they should be Prometheus, Grafana, and Loki, and Tempo, and Limit. So Grafana comes with a lot of open source one, and the other products in this line is Datadog and all those stuff. But we'll go deep somewhere in a session with observability stack, which will pull your metrics from a namespace level, and then you can integrate with some other products which would provide you an incident or a pager alerting kind of stuff. And then this is the base of a namespace. Like, how do you segregate when you create a namespace? What are the features you would provide a namespace to make it more secure? So there would be something like namespace per team. There would be network policies. So network policy would deny any application namespace components to interact with other team A or team B kind of stuff. So that would be segregated unless you allow it up. So maybe they would be a team A wants to interact, then we can use the network policies, but by default they would not be allowed. So this is something comes as a part of the segregation at the network layer. And then you have resource quotas and limit ranges. This is to make sure that certain namespaces, when they are onboarding, do not consume too much that it becomes a noisy neighbor for someone else. So this is the component of the namespace level consuming the resources and limiting all those stuff. And there are some pod security standard which we require for the security policies. There are some benchmarking that I will go a bit later on. But as of now, we will have some security policies with regards to e-windows for the namespace level. And then they can deploy their stuff, all those stuff over here. So maybe this is the initial part. Any questions? How do we?
I think you can continue. I mean, it is very high level as of Yeah. now. Maybe Yeah. we go deep and we can have. So the next is, how do you want to go deep level, as an admin level or a developer or consumer like? So it's a very high level, but So we are mostly consumer of this. Like we don't understand what happens inside, right? So okay. at that level, we should know. And if we have to manage this thing, like up to what level a developer should know better. Okay. So as a consumer kind of stuff. Okay. Yeah. So okay, I think this is a bit of history. If you want, you just get it up. All those things, how things emerged out. What are different flavors of Kubernetes? Like you have OpenShift and different cloud providers. So how they was used. So OpenShift is mostly used in telecom and financial industries, where you require the data to be on-prem. But they also come with on the cloud infrastructure also. So depending upon your use case of data, all those steps are there. Okay. So I think first thing is the RBAC. How does it works out in Kubernetes world? So RBAC is mostly dependent on 4 components of the objects over here, like roles, cluster role binding, and cluster role binding. So how do you make sure that an SRE team, which is your actor, like who manages the clusters, should get cluster level roles, and someone who is a namespace admin, like you get a namespace as a developer. Sure, your access should only be within the scope of the namespace. So these are the 4 components which help us to design that RBAC for a namespace level kind of stuff. So role and cluster role. So role is very namespace specific. So let's say application team comes to you that I need a particular role for my particular object. So you can create a role and you create a role binding. So these are like things like you can do it up. And someone in the SRE team that I need a more cluster role, and you can create a cluster role and then a role binding so that they can create that stuff over here. So this is like 4 principles. How do you interact and give the access to it? So let's say you as a developer goes that I'm not able to do this thing, or my service account which is there in Kubernetes is not able to do this thing. So you have to see which role they are being granted up and which is the role binding. So you may have the role, but you don't have the role binding. Unless you don't have a role binding, you will not be able to use that role. So these are like the role binding stuff. Like how do you troubleshoot any RBAC issues, like with respect to your service account not able to do something on your Kubernetes clusters. So this is a bit deep of policy. I just gave you this stuff. So this is like team A, team B, the same thing which I had earlier, but here are different operators. So how do I make sure that certain things which admin can do, but I don't want to give them the admin access, but I want the end users to use it up. Let's say there are some gateways which you create. I will come down over here in the gateway part, like how does the gateway, the traffic which goes into Kubernetes, how does it works out? So there are some new operator which has come into play, like it is Pro orchestration operator, which provides you a template. Like the SRE team can create a template, and then the developer can use it up. So there are certain admin privileges, but they don't want to give admin privileges to you, and they just want that you can create something out of as a template, and then they give you a template that fill this information, and at the back end of your creation of that template, they will create whatever things you want, which you cannot create up from admin level kind of stuff. So these are like the RBAC, team A and team B, which we decided. And then you have this management clusters, which is the GitOps, Argo CD and Flux. So you use this to sync from here to all the shared clusters. And then the platform SRE team will manage this external secret, given the policies, Pro operator, cert managers, all those stuff. So this is which we discussed about the RBAC model, the role binding,
and then the cluster roles. For SRE team, it would be cluster role binding, and cluster role would be like cluster admin. So this is how you bind a cluster role to a cluster binding, and then the SRE team or who manages the clusters will get this admin level of privileges at a cluster level. But for a team developers, they would be role binding and a role. Can be cluster role or role also. You can bind it up depending upon it. The role binding is important. If it is a cluster role binding, it will go to a cluster level. But if it's a role binding, it would be go to a particular namespace boundary level. This is how the RBAC works out. Any query? Is it okay or should? Or should I proceed further? Continue. Please continue. Okay, so this is about the gateway API. Gateway API, when you look from a shared clusters, how do you make your traffic inside your Kubernetes cluster? So recently, there was a news in Kubernetes that the ingress, which used to be before, has changed the way now. Can you see my whole screen or just specific? We can see the two boxes, the old way, the new way. Yeah, okay. So this was the ingress resource in March 2026. So this ingress resource used to be there. Now the Kubernetes CNCF has made agreement, announced last year that by March 2026 end, this ingress resource will not be available. You have to move into gateway API. So this is the modular approach, which you see in the Kubernetes that you've been asked to move away from ingress resources and move into gateway API. So initially this was there for a long time, but there were a lot of challenges ingress resource, using of ingress resource. The challenges were like certain things which a developer wants to do it and certain things which admin wants to do it up. So how do you give this permission to whom? If something is the same team, the developer and manages the SI team, both are the same team, then it's okay. But there are things like certain things developer would like to do it for the application level. So that's where they segregated the components in gateway and HTTP route. So this gateway was something which the SI team will manage, and this HTTP route will be managed by the application team. So if you see the application, this is the component which you want to use to filter your traffic controls, like what type of header, based on header, what should be the backend path routing. So this is not the platform team will look into that stuff. So that's why the reason to segregate was this. It was not flexible enough. There is no RBAC segregations. So development can touch then TLS, certain things, configurations which you want it from the cluster level, like I want cluster to be TLS encrypt and all those stuff. So this is the reason, like it was decided to move from ingress to the gateway API. So gateway will be managed entirely by the platform team, and the HTTP object in the K8 will be managed by the development team. So this basically segregate the concerns of who would be doing what and what should be the control on the stuff. So this is something a deep, not much deep level, but something I will go a deep level later on. But this is something that you can have TLS mode terminated pass through. So basically this will help that requirement that sometimes you come across that as a platform team, you're being asked that all application has to have a mode of terminate or pass through. So this would make sure that platform team can put this as a template, and with this Crow, which is a new one, this is Crow orchestration. This was developed by AWS, and this has been used open source, and this is being used by
every cloud providers now. So basically, it helps us to provide a template which application team can use, but a template would be created by the platform admin team. So this will segregate your duties on the part of things, and you can get as a self-service for development teams. For every component, you don't have to interact with ask with the SRE teams, but just create a template, and then based on that, you can create an STP route, and then you can use this traffic control. So this is, I had one scenario over here. Want to go deep on the gateway API? Yeah, means let's take one use case. Okay, so how does it works out first? So the client here is an application team who is trying to connect to your pod, which is your pod running, compute where you're running your service at the backend. So in a Kubernetes work, you create a pod and you create a backend service. So service is required to make a stable IP. But how do you, as an user of the application, would be consuming your backend services? So a gateway infra admin, it has to be created by infra admin, but with Crow, you can provide privileges, some template where you can control that stuff. So there would be different ways of TLS pass-through and TLS termination. I will go a bit deep later on. But pass-through is like you are doing termination at the pod level on this stuff. So let's say there's an API.example.conf, and then it's no description required here at this point of gateway. The TLS pass-through, it will pass your TLS and it will be terminated at the pod level. So this is more encrypted kind of stuff. And then it will forward the raw encrypted stream, as it cannot decrypt anything. It just will forward the TCP over here, and then it will deliver to the service backend services, and it will terminate the over here. And then it's end-to-end encrypted tunnel. So basically, this is a security aspect. Like I don't want to terminate at the gateway level. I just want to terminate at the app pod of the running application team. And then there is a TLS termination, which happens at the gateway level. So you have an example like web example, and then you provide the terminations at this gateway level. So it will terminate it up and will decrypt it, and it will have the L7 headers or your site. Apply the filter based on what you have it here on this filter level. Like I want my path-based routing, like what is my API, and then where does it has to go to which services. So it will terminate over here, and then we'll see the STP route which application team creates, and then it goes to the pod, backend pod, and then gives the response back stuff. So this is required to make sure that the TLS termination happens at the gateway level. So depending upon what you want to achieve, you can have this termination at gateway level or termination at the app pod level. So this is the way, like the future proving of things which will happen in the Kubernetes world, like after March 2026, end of March 2026. Nothing would be available as an ingress resource. Everything has to go to gateway API. You will hear a lot of gateway API in terms of Kubernetes world. Like how does the traffic flows out from this? Which is the common approach to is being taken, like TLS termination at the entry level or the gateway level, or But it depends on the requirement. Like it adds more responsibility to the pod if we terminate at the pod. Yeah. Depends on the requirement. Like if you don't have very path specific apply filter at this point of time, you can go with this pass through. Otherwise, terminate at the gateway level. Because if you have something filtering and you're using STP route, like I want to route a particular endpoint to particular services, then you have to terminate at the gateway level. Okay, another question, like in this service, right, where we are terminating at the pod level.
how this route is found? Like there will be many pods, right? How No, the gateway service is will, it. Backend service. It goes to backend services, and service knows which port to go to. so it will do the decryption. I At mean the the termination. at the pod level. No? No, so let's say backend service, you got the stream, okay, Yeah. which is encrypted, and now there are Yeah. many pods, right? Yes, it go to any pod within the service. Okay, so there will be a cluster of pods which are serving the same thing. Yeah, many replicas. Okay. So with a label, it service has a label which is knows like how many pods are connected to this service. Okay. So that's a Kubernetes standard to know. Service is used to provide a stable IP to connect to pods. Pods do not have a stable IPs. So how does service know that I need to connect to this pods? It has a label within its metadata, which matches with the pod level label. So it sends that traffic over there. Okay. So this is, I will add something on this stuff, but this is how the things would emerge in coming down the 6 month, because there is a lot of transformation happening to move to Gateway API. If you search it out, Gateway API also, you will see a lot information. Let me bring it on this. Gateway API. It's a driven approach, which how do you manage the traffic to ingress to the Kubernetes pod and services? You can have a look like how segregation is happening, because it was difficult to segregate the initial everything in Kubernetes resolve around RBAC. Who can do what? Mhm. The application team wants to make a changes to STP route, which was they has to go to platform team, and then it was difficult because they don't know what the application routing has to happen. So they have to provide and all those stuff. That's why there was segregation of this stuff. And then you can use this as a template. Okay, you can proceed. I think I covered something for today. Anything you want is specific, I can cover more now deep next session. So Yeah, maybe in the next session, Hmm. you can just do a very because we don't deal much like what kind of thing means. Once I tried to put into a bare metal this Kubernetes and this cluster. Mhm. So I mean, I learned many things and I forgot also as well. So Mhm. like what all the basic building components are there in a cluster, and Okay. what is the role of these clusters. So right now means you have taken it a very high level, which is like how to manage cluster and all those things. Hmm. But let's say I am setting up a cluster. So what and all components are there in that cluster? And let's say I'm putting a service. I'm bringing up a service with few parts. So what and all Hmm. things I need to know as a developer, and Okay. and means if let's say I have to set it up, so what should be the flow? So that will give us some basic idea, and then maybe these things will cover. And definitely we want to go more into the observability stack. You can take one session on that, like Okay. Prometheus and Grafana, uh, how those things works. Which cloud providers? Any specific cloud providers, or how do you want to proceed? You can tell in generic format because cloud providers. Every इसमें ये अब जो क्वेश्चन बताया था, मतलब सिस्टम डिजाइन में एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन पूछते हैं इन जनरल, लेट्स से फॉर पीपल हु आर नॉट वर्किंग, मतलब हम लोग तो यूजर हैं अभी इसके, तो हम्म, सिस्टम क्वेश्चन क्या है इसके आर्किटेक्चर के अराउंड है क्या, अंकित जो रोहित ने बताया था? हाँ, मैंने इसमें मतलब
इसमें मेनली क्या है कि आप एक लार्ज स्केल सेटअप है, मतलब हाँ आप सोचिए कि 100 क्लस्टर आपको मैनेज करने हैं, आप एक क्लस्टर की बात कर रहे हैं जैसे कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, करेक्ट और करेक्ट आप अगर आपके पास पूरे ऑर्गेनाइजेशन में 100 क्लस्टर है, तो वही लार्ज स्केल सेटअप्स के लिए आपको कैसे करना है। आपको अभी देखिए इसमें अभी को लिखा नहीं कि कोई सिक्योरिटी कंसर्न आ जाए और आपको उसको रिजॉल्व करना है विद इन 4 आवर्स, तो आप हर क्लस्टर पे जाके नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो टू ईच एंड एवरी क्लस्टर्स डू ऑटोमेशन काइंड ऑफ स्टफ। सो उसके लिए आपको पूरा एक डिजाइन करना है इस चीज के लिए। तो मैनेजमेंट क्लस्टर एक होता है गवर्नेंस पॉलिसीज के लिए। करेक्ट। हाँ वो पार्ट बिल्कुल क्लियर हो गया मुझे, या हाँ मैनेजमेंट तो क्लस्टर वाला पार्ट तो क्लियर था आपका। हाँ तो उसमें आपको कैसे मैनेज करना है, आपको अगर आप जैसे बहुत रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में रेगुलेटेड, मतलब जैसे मैं बैंक में रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि आपको चीजें आपको कैसे कंट्रोल करके आपको पुश करनी है, फिर आपको कैसे एक क्लिक से सारे क्लस्टर पे चले जाए, तो आपको डिजाइनिंग करनी है पूरा स्टार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। और पॉइंट ये है कि एज एन डेवलपर he does not has to look to the underlying infrastructure deployments, cluster deployments. उसको बस एक नेम स्पेस चाहिए and he can deploy it, their services for whatever things in a namespace. So he doesn't has to care about the admin part of things. तो वो एक प्रोडक्ट था, मतलब how do you design that product. तो अगर आप AKS में भी देखेंगे तो AKS has come up with a product which is managed namespace. आपको एक लिख देता हूँ, तो उसका ये एक तरह से ये डिजाइन था। हाँ प्रोडक्ट है AKS मैनेज नेम स्पेसेस का, तो ये है, मैं आपको इसका लिंक देता हूँ, इसका ये एक है। सो टेल मी वन थिंग, मतलब एक पार्ट तो ये हो गया विच इज योर गवर्नेंस लेयर वाला या मैनेजमेंट क्लस्टर, वेयर दिस इज नथिंग बट अ ऑर्केस्ट्रेटर ऑफ द क्लस्टर्स, ठीक है। एक एक पार्ट इसके अराउंड रहा, व्हाट आर द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द डिजाइन दैट आर एक्सपेक्टेड? नहीं बस ये है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन डिजाइनिंग है, एप्लीकेशन की हाई लेवलिटी। अगर आपका एक क्लस्टर डाउन हो जाए तो दूसरे क्लस्टर पे कैसे चलेगा कंपोनेंट्स, तो वो आपको कैसे डिजाइन करना है एप्लीकेशन बीसीएम ऑन टॉप ऑफ इट। एक क्लस्टर उसमें क्या बताया आपने, एक्चुअली जस्ट रिपीट इट फॉर मी वंस। किसमें एक क्लस्टर डाउन हो जाए तो मतलब बहुत बड़ा, अगर हमारे पास मतलब हाउ डू यू रिकवर फास्टर, वो उसमें क्या अप्रोच है यहाँ पे? नहीं, एक क्लस्टर आपका डाउन हो गया लेकिन एप्लीकेशन तो आपकी एक क्लस्टर पे चल जाए, दो एप्लीकेशन दो जगह चलेगी ना, आपकी एक्टिव एक्टिव पे चलेगी, एक्टिव पैसिव पे चलेगी। वो वाला सेटअप, ओके ओके, हाँ, ठीक है, दैट्स ओके। एप्लीकेशन अगर इस पर डिप्लॉय हो रही है ऑन टॉप ऑफ इट, तो हम्म, वो आपको कैसे डिजाइन करना, मतलब एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया ये। हाँ ये भी है, ये भी कंजर्व पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। हाँ, ये वाला था, मतलब मोस्टली अगर आप देखेंगे कम लोग होते हैं इसमें, बट हाउ डू यू मैनेज दैट लार्ज स्केल सेटअप्स। तो मैनेजमेंट क्लस्टर्स का भी आपको एचए बनाना पड़ेगा, मतलब एक दूसरा क्लस्टर बनाना पड़ेगा, फिर उसको भी दोनों को सिंक करना पड़ेगा। अभी इसमें मैंने कॉम्प्लिकेशन नहीं डाली है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, क्योंकि मैनेजमेंट क्लस्टर भी दो होंगे आपके, तो दोनों क्लस्टर से भी सिंक होना चाहिए स्टेट। और फिर आप कैसे प्लेसमेंट करेंगे पॉलिसीज का, मतलब आपको ये भी बोला जाता है कि कोई टारगेटेड पॉलिसीज इस जगह जाएगी, कोई इस जगह नहीं जाएगी, और सारे कंप्लाइंट है कि नहीं है। तो उसके बाद ऑब्जर्वेबिलिटी आप कैसे लेंगे, आप कॉस्ट कैसे लेंगे, मतलब पर क्लस्टर वाइज लेंगे कि ऑब्जर्वेबिलिटी से ही आप मैनेजमेंट क्लस्टर में ऑब्जर्वेबिलिटी डालेंगे। तो और भी चैलेंजेस हैं, मतलब प्लेटफॉर्म लेवल पे अगर आप उसके डीप में जाएंगे तो, मतलब जो सेटअप है 100 लार्ज क्लस्टर्स, हर एक क्लस्टर के अलग रिक्वायरमेंट है। कनेक्शन 100 लाइट ऑफ क्लस्टर्स होंगे, और अब कुछ कंफिग आपको कुछ क्लस्टर में नहीं भेजनी, किसी में भेजनी है, तो वो सब चैलेंजेस हैं। मतलब कुछ पॉलिसीज आती हैं, कुछ को एक्सटर्नल फेसिंग क्लस्टर बनाना है, हाउ डू यू सेट अप ऑल दोस पॉलिसीज। तो वो एक, मतलब एक हाई लेवल बनाया था मैंने अभी इस चीज का, कि हाउ डू यू मैनेज व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग एज अ प्रोडक्ट टू अ टीम व्हिच वांट्स टू डिप्लॉय द कंटेनर्स without managing the admin part of things. Next level में maybe I will move into consumer point of things, like तो ये बेटर हो है कि अंडरस्टैंड कैसे अपने क्लस्टर मूव कर रहे हैं यहाँ से वहाँ पर, मैनेजिंग द क्लस्टर एज अ लार्ज स्केल। तो इसमें बहुत सारे क्लाउड प्रोवाइडर्स का अलग वो आते हैं, मतलब अगर आप एज़्योर में जाएंगे तो फ्लीट मैनेजर होता है, और आप जीके में जाएंगे तो कॉन्फ़िग कनेक्टर्स होते हैं, और ईकेएस में अलग कनेक्टर्स होते हैं which help us to provide you the configs movement from this way to this way. और क्या आप अंकित कुछ?
कोई setting of the cluster pod as a pod service as a developer. Yes. हाँ यार, वही देख सकते हैं एज ए डेवलपर। हाँ मतलब जैसे कि आई मीन कैसे आप लॉग कैसे देखते हो इसमें, मतलब जैसे बहुत बड़ा क्लस्टर है तो उसका लॉग कहाँ दिखता है इस केस में? हाँ, लॉगिंग का भी देखिए, अभी इसमें आप अगर आप एज क्लस्टर्स जाएंगे अभी केस क्लस्टर्स में, तो उसमें आपको लॉगिंग मिलेगी, क्लस्टर लॉगिंग, मतलब क्लस्टर्स के कंपोनेंट्स की लॉगिंग, मतलब ऑडिट लॉग्स हो गए, ये सब लॉग्स हो गए, तो वो मैं एक एसआईटी के पास रखना चाहता हूँ। लेकिन जो नेम मैं स्पेस मतलब लॉगिंग, जैसे जैसे एप्लीकेशन लेवल पे जैसे हम लॉग्स पब्लिश करते हैं, है ना, और मेरा क्लस्टर मान लो 500 नोड का है, ठीक है, और अभी मुझे कुछ प्रोडक्शन में इशू डिबग करना है, तो मतलब इस केस में कुछ मतलब सेंट्रलाइज्ड लॉगिंग जैसा मिलता है हमको, क्योंकि पर बॉक्स जाना संभव होगा नहीं बहुत बड़े क्लस्टर में, आई बिलीव, है ना? तो नहीं नहीं, आपका जैसे आप अभी डेवलपर हैं कि एडमिन? एज ए डेवलपर बताओ। तो एज अ डेवलपर क्या होगा कि एडमिन एक सोल्यूशंस होते हैं कि हर नेम स्पेस ये कस्टमाइज सोल्यूशन बने हुए हैं कि हर नेम स्पेस की लॉगिंग जो भी वो लॉग करेंगे कंसोल आउटपुट में, दे विल गो टू द लॉग एनालिटिक्स, उसके लिए कस्टम सोल्यूशन बनाया गया है। तो व्हेनेवर योर लॉग्स ऑफ अ नेम स्पेस, फिल्टर लगा के फ्लुएंट बिट आई बिलीव वो हुआ था, तो उसके फ्लुएंट बिट के थ्रू आप इसमें, फिर उसके बाद आपका एक लॉग एनालिटिक्स होगा। लॉग एनालिटिक्स एसक्यूएल वर्ड में है, जो एक आपका लॉग स्टोर करता है, फिर उसके बाद एनालिटिक्स करता है। तो वी मेक सम कंपोनेंट्स ऑन टॉप ऑफ इट, तो जिसमें आपका सिर्फ नेम स्पेस के लॉगिंग से उस लॉग एनालिटिक्स में जाएगी जो भी आपके कंपोनेंट की लॉगिंग हो। तो डज दिस मीन दैट मतलब एक सेंट्रल लॉगर है जहां पे लॉग्स फ्रॉम एवरी इंडिविजुअल सर्वर आर देयर इन दैट क्लस्टर, ऐसा क्या? मतलब एम आई क्लियर विद द क्वेश्चन? क्या मतलब भाई मेरी आवाज आ रही है क्या अंकित? नहीं, मैं पता नहीं। आ रही आ सर। रही सर, आ रही हाँ, सर। मतलब एक क्लस्टर 500 नोड का है, एक सर्विस डिप्लॉय हो हाँ रही है और मुझे कोई डिबग करना है, तो मैं मतलब आप कह रहे हो कि सेंट्रलाइज लॉगिंग है जहाँ पे सारे सर्वर्स का जो 500 सर्वर हैं सबका लॉग्स एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, ये बोल रहे हो क्या आप? देखिए, दो लॉग है, सर्वर के लॉग्स आपको एप्लीकेशन टीम को चाहिए कि नहीं चाहिए, पहली बात। अगर आपको चाहिए तो फिर वो एडमिन लेवल के पास रहेंगे, और अगर वो एप्लीकेशन के लॉग चाहिए तो आपके पास हाँ रहेंगे। हाँ, एप्लीकेशन के तो लॉग लॉग चाहिए। एडमिन, हाँ, तो वो एक कंपोनेंट बनाया जाता है, मतलब मोस्टली आपको क्लाउड प्रोवाइडर्स में नहीं होता, जैसे मैंने ऑन प्रेम में काम किया है और हाँ, क्लाउड प्रोवाइडर्स में, तो ये सोल्यूशंस नहीं आता है। आपको कस्टमर सोल्यूशन बनाना पड़ता है, इसके फ्लुएंट बिट के ऊपर टॉप अप बनाना पड़ता है कि अगर आपके नेम स्पेस फिल्टरिंग करनी पड़ती है उसमें, तो ये नेम जो स्पेस क्लाइंट है ये आई हैव सीन डेवलपर रनिंग कमांड लाइक kubectl हाइफन लॉग्स का कुछ तो कमांड चलाते हैं। नहीं, हाँ, वो तो आपको बस उस टाइम भी लॉग्स दिखेंगे, थोड़ी देर से लॉग्स उसके फॉर 1 आवर्स, बट आपको लेट से अगर अच्छा। 24 लॉग चाहिए तो हाँ, वो लॉग्स आपको इंजेक्ट करना ही जगह लॉग एनालिटिक्स वर्क स्पेस पे। तो वो एक कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लुएंट बिट के थ्रू आप फिल्टर करते हैं कि इस नेम स्पेस का लॉग है, तो यू सेंड योर लॉग्स टू, और लॉग एक सीआरडी बनता है, उसके बाद लॉगिंग एंडपॉइंट के बाद आप सीधा उस पे लॉग्स आपके जाएंगे, राउटिंग बन जाती है कि अगर आप ये है तो लॉग एड्रेस का पार्ट होगा, उसके बाद आपको वहाँ पे आपके लॉग चाहिए। तो वो एक कस्टमाइज सोल्यूशन होता है, यू डोंट सी दिस सॉल्यूशंस कम्स इन एज अ पार्ट ऑफ एनी क्लाउड प्रोवाइडर्स। तो क्लाउड प्रोवाइडर सिंक्स कि जो क्लस्टर एडमिन है और जो एप्लीकेशन डेवलपर है वो एक ही टीम का बंदा है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आया था, मतलब कि सेग्रीगेट करना है, आपकी दोनों हाल बैठे हो। एप्लीकेशन टीम, प्लेटफॉर्म के एडमिन टीम शुड नॉट सी एप्लीकेशन लॉग्स, एप्लीकेशन टीम शुड नॉट सी क्लस्टर लॉग्स। ओके। तो उसको अगर मैं करना है तो मैं डीप लेवल पे बाद में कर दूंगा, उसकी डिजाइनिंग है, मतलब मैंने किया हुआ, तो एडमिन लेवल पे अलग डिजाइनिंग करनी है उसके लिए, आपको ऑपरेटर लिखने पड़ते हैं उसके बिहाइंड द सीन्स। हाँ, ये वाला पार्ट बताना यार, ये ऑपरेटर कैसे लिखते हैं एटसेट्रा, है ना? ओके, हाँ ठीक है। एक क्यू बिल्डर आता है, और इसमें आपको जैसे अभी हाउ टू डिप्लॉय एआई एजेंट ऑन टॉप ऑफ इट, तो उसका भी एक एजेंट आ गया है कुबरनेट्स के ऊपर। तो लेट्स सी बिल्ड एन एआई एजेंट विद एनी फ्रेमवर्क, क्यू एआई और एनी फ्रेमवर्क, बट हाउ यू वांट टू रन इट ऑन एनी कंप्यूट पार्ट ऑफ थिंग्स। तो कुबरनेट्स ने भी अपना एक की एजेंट निकाला है, तो यू कैन डिप्लॉय योर स्पेसिफिक बिल्ड एजेंट on top of Kubernetes, and how do you interact with LLM behind the scenes. तो उसमें वो भी proposals हैं, and then you can inject your MCP servers, different callings, all those stuff. तो उसका एक K agent है, लिख देता हूँ,
मैं उसको कवर कर लूंगा अगर है तो ये डाल देता हूँ। श्योर। हाँ मतलब थोड़ा जीपीटी में सर्च कर रहा हूँ तो ये बता रहा है कि वो kubectl लॉग्स तो मतलब पर हाँ पर्टिकुलर नोड पे करते हो आप, सिंगल बोर्ड पे, सिंगल नहीं कोड। नहीं, वो तो आपको दे देगा लॉग्स, आपको 1 घंटे के लॉग्स दे देगा बस। उसके बाद अगर आपको 24 आवर्स पहले क्या हुआ है वो आपको स्टोर करना पड़ेगा। देन एक्चुअली मतलब कुछ हाँ लॉगिंग एजेंट हाँ चलाना पड़ेगा हर नोड पे और उसको हाँ इलास्टिक सर्च जैसे सेंट्रल स्टोर पे ले जाओ, है ना? हाँ हाँ, ओके। वो उसमें जो एजेंट होगा उसमें फिल्टरिंग करनी है आपको। हाँ फिर मतलब सेंटर मतलब बेसिकली सेंट्रलाइज लॉगिंग ही हो गया एक तरह से, इलास्टिक सर्च पर सब लॉग्स ले गए तो। हाँ ओनली इंटरेस्टिंग थिंग इज ये कैसे अरेंज करता है मतलब लॉग्स को, बहुत बहुत सारे टाइम कुछ मेटा डेटा डालता होगा, मेटा डेटा लाइक टाइम हाँ स्टैम्प, हाँ। बॉक्स आईपी वगैरह कुछ होता होगा। मेन इंटरेस्टिंग पार्ट, ट्रिकी थिंग इसमें ये है कि आप एक एप्लीकेशन दूसरे नेम स्पेस का लॉग ना देख पाए और वो आपका नहीं देख हाँ पाए। हाँ हाँ। ये सबसे ट्रिकी थिंग है। मतलब लॉग्स आप एक जगह सब भेज देंगे, बट ट्रिकी थिंग ये होती है कि you should not be able to see other namespace logging and other namespace should not be see the logging. तो वो फिल्टरिंग आपको करनी पड़ती है, वो आरपेक लेवल पे भी होगी। डिफरेंट जो भी आपका बैकएंड है, इलास्टिक सर्च है या स्प्लंक है, स्प्लंक इज गुड। स्प्लंक में क्या है कि आरपेक अच्छा कंट्रोल होता है। तो ये बताओ नेम स्पेस, जो नेम स्पेस का जो मान लो एक दीवार है या वॉल है, ये हम्म ये टीम्स के बीच में है। एक टीम की अगर हम्म 50 एप्लीकेशन है तो उनके साथ भी तो ये प्रॉब्लम हो सकती है ना कि दे विल। तो नेम स्पेस आप यूजुअली मतलब टीम लेवल पे ही बनाते हैं यूजुअली, टीम ज्यादातर, या फिर इट आल्सो एट द यू कैन से एक टीम में 50 सर्विस है तो सर्विस लेवल पे ही बना सकते हैं क्या आप नहीं यूजुअली? नहीं, डिपेंड करता है कि नेम स्पेस अगर जितनी टीम्स हैं अगर वो अपने कंपोनेंट सेग्रीगेट करना चाहते हैं, टीम्स एक हो या नहीं हो, लेकिन कंपोनेंट पे डिपेंड करता है ना कि आपको ये कंपोनेंट है जैसे पेमेंट कंपोनेंट, वो नहीं चाहते हैं कि वो किसी और से इंटरेक्ट हो, सर्टेन सर्विस से इंटरेक्ट हो। मतलब they don't want the payment services to interact with all the components. तो उसके लिए हम एक नेटवर्क पॉलिसी, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, आपको दिखा है इसकी, तो ये नेटवर्क पॉलिसीज आपको दिख रही है ये मेरा स्क्रीन। हाँ हाँ या तो नेटवर्क पॉलिसी से कंट्रोल होता है कि किस नेम स्पेस किस कंपोनेंट से कंडक्ट करता है। बाय डिफॉल्ट वी मेक इट जीरो डिनाई टू एनी अदर नेम स्पेसेस, और अगर रिक्वायरमेंट होती है देन वी कैन चेंज दैट। तो नेटवर्क पॉलिसी इसके लिए यूज होती है, मतलब एक नेम स्पेस दूसरे नेम स्पेस कॉल कर सकती है कि नहीं। अब इसमें और भी ट्रिकी थिंग्स है। अगर आप सोचिए नेम स्पेस पे मैंने 4 सर्विसेज रखी हुई है, पर मैं चाहता हूँ कि 2 ही इंटरेक्ट करें, 2 ना इंटरेक्ट करें, ये भी आता है गिरनर लेवल पे। तो उसमें आपको स्टीओ आता है, स्टीओ जो आता है ना, स्टीओ ओपन सोर्स, हाँ 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 सुना है हाँ या उसमें एक ऑथराइजेशन पॉलिसीज होती है। ओके उस लेवल पे भी करते हैं। जैसे अब यूज केस आपको बता रहा हूँ कि पेमेंट सर्विसेज होती है मोस्टली, पेमेंट सर्विसेज बैकएंड है, वो चाहते हैं सिर्फ यही सर्विस में से इंटरेक्ट करें और कोई सर्विस इंटरेक्ट ना करे, तो वो एक ऑथराइजेशन पॉलिसी लगा लेते हैं लोग, आईपी लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे या कुछ भी। तो वो डिपेंडिंग ऑन यूज केसेस है, आपको इसलिए वहीं पे यूज हो जाता है, मतलब ऑथराइजेशन पॉलिसी कितना आपको सिक्योर करना है आपका एनवायरनमेंट को। ओके श्योर। और क्या था, और एज अ डेवलपर क्यूब बिल्डर जो ऑपरेटर बिल्ड करने के लिए, और एक की एजेंट है, जैसे आपको मैंने पिंग किया था की एजेंट लिंक अभी। तो बेसिकली ये अभी न्यू आया है और ये बेसिकली यूज होता है आपके जितने भी एआई एजेंट है, हाउ यू डिप्लॉय ऑन द कुबरनेट्स। तो उसके एक बेसिक स्टार्ट दे रखा है हम लोगों ने। तो डिफरेंट ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करना है, टू एंड डिफरेंट एजेंट कनेक्ट, द ए टू ए प्रोटोकॉल्स कैसे इसमें होंगे। तो अभी बहुत मैच्योर नहीं है, बट स्टिल पीपल आर यूजिंग इट अप की एजेंट। तो उसको मैं एक बाद में थोड़ा सा कवर कर दूंगा, एक मे बी डाउनलोड, तो मैंने भी लिंक उसका पिंग कर दिया agent.dev। तो वो मोस्टली अभी यूज हो रहा है, सारे जितने भी एजेंट्स हैं जिनको एलियंस कनेक्ट करना है और डिप्लॉय करना है कुबरनेट्स विद नेटवर्क पॉलिसीज अराउंड दो स्टफ। तो कंटेनराइज्ड में एक ये पॉइंट मैं कवर कर दूं।
एक ऑपरेटर का एग्जांपल दो, ऑपरेटर क्या एग्जांपल दो ना, ऑपरेटर का क्या मतलब है तुम्हारे? तो ऑपरेटर वो भी एक्सटर्नल सीक्रेट ऑपरेटर, तो मतलब जैसे सीक्रेट, क्या करेगा ऑपरेटर, क्या करता है, जैसे एग्जांपल? अब देखिए पॉड भी एक ऑपरेटर ही है। पॉड एक जो डिप्लॉयमेंट है, डिप्लॉयमेंट से पॉड बनते हैं, तो वो भी एक बार देखता है कि बार बार पॉड बंद हुआ, स्टार्ट हुआ तो बार बार स्टार्ट हुआ, रिकनसाइल करता है ऑपरेटर। तो इस लाइक जो ह्यूमन काम कर रहा है बार बार वो देख रहा है उसको, ओके, इज एन ऑपरेटर काम कर रहा है। तो एक नहीं कैसे जैसे वो ये मतलब तो एक रियल एग्जांपल जैसे मैं ऑपरेटर बनाऊंगा तो किस यूज केस के लिए बनाऊंगा, एक ऐसा एग्जांपल बताओ मेरा अभी आपको लॉगिंग का, अच्छा लॉगिंग का लॉग ऑपरेटर बनाऊंगा, ओके। अगर इस नेम स्पेस के लॉग है तो इस लॉग एल्डेक्स पे भेजिए, इसके हैं तो इसके भेजिए, क्योंकि ऑपरेटर आप काम कर रहे हैं। अच्छा हाँ, आपको मतलब ये काम है कि इस नेम स्पेस के अगर लॉग्स आ रहे हैं तो इस एंड पॉइंट पे भेजिए, इस इलास्टिक सर्च के एंड पॉइंट पे भेजिए, अगर इसके अंदर भेजे हैं तो इसके स्प्लंग भी भेजिए, ठीक है, इसके हैं ठीक, तो इसके अलग भेजिए। मतलब जो काम एक ह्यूमन करता है उसको एक ऑटोमेटेड वे में ऑपरेटर। गॉट इट। ऑपरेटर आप लिखते हो YAML फाइल से क्या? नहीं नहीं, उससे एक फ्रेमवर्क आता है क्यू बिल्डर, आपको भेज देता क्यू बिल्डर? हूं। हाँ, क्यू बिल्डर तो पूरा आपको ऑपरेटर बनाने की जरूरत है। जैसे सर्ट रिन्यूअल्स हो गए, सर्टिफिकेट मैनेजर। हाँ आप ये कवर करो ना एक बार, मतलब नेक्स्ट सेशन में, कि एक ऑपरेटर का ये रियल यूज केस, जैसे कि जहाँ पर जरूरत पड़ती है ऑपरेटर बनाने की और कैसे बनाया वो वाला ओके पार्ट ओके, कर सकते हैं आप। क्योंकि ऑपरेटर मोस्टली ये आजकल, पहले था कि ऑपरेटर्स बनते थे, अब आजकल आपको देखेंगे ऑपरेटर सब बने बनाए हैं टू यूज इट अप। आई कैन गिव यू द हाउ डज ऑपरेटर वर्क्स आउट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस पहले ही मैंने बनाए थे, तो अब तो मैं क्या, जितने भी यूज होते हैं हर चीज का ऑपरेटर आपको मिल ही जाता है, ओके ओके, अनलेस वेरी कस्टमाइज बनाना होता है। लेकिन आपको अब ऑपरेटर को यूज करना आना चाहिए, मतलब हाउ डू यू कंज्यूम दैट ऑपरेटर। हाँ ठीक है, जस्ट स्टिल एक एक समझा हाँ, देना, बाकी विल विल अंडरस्टैंड आल्सो हाउ टू हम्म, यूज। हम्म। अभी तो जेमिनाई वेमिनाई पे मिल जाते होंगे ऑपरेटर, आप ये बोल रहे हो सब बने बनाए ना? नहीं, बने बनाए मिल जाते हैं, रेपो मिल जाती है, फिर उसकी इमेजेस होती हैं, आपको उसको हम्म, उसकी आईडी का यूज करके कैसे यूज करना है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो हो जाता है। क्योंकि अब जैसे एक्सटर्नल सीक्रेट ऑपरेटर एक था, जैसे आपके अभी लॉगिंग जा रहा है, तो आपके सीक्रेट जैसे वॉल्ट में रखे हुए हैं हम्म, डिफरेंट डिफरेंट पाथ्स में, आप एक नेम स्पेस सिर्फ अपने वॉल्ट से उठा सके पाथ से, तो उसके लिए भी एक ऑपरेटर चाहिए। ओके ओके श्योर। तो वो एक एक्सटर्नल सीक्रेट ऑपरेटर है, वो इस वाइज वो बहुत जगह यूज होता है, हर जगह यूज होता है लगभग। सीक्रेट ऑपरेटर है, ये सब पूरी अच्छी तरह से बनाए हुए हैं, टेस्टेड है, हेवीली टेस्टेड। श्योर, तो इसको जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं उनके कैसे बनाया हुआ है, जितने भी आपके ऐसे सीक्रेट ऑपरेटर है AWS के साथ, ये गूगल का है, Azure की वॉल्ट, तो उनसे सीक्रेट देके आपको कुबरनेटिस क्लस्टर पर रन टाइम पे कैसे देना है, तो उनका पूरा एक पेज बना होता है, ये सब मैंने थिंक किया है। तो उनका आर्किटेक्ट कैसे मॉडल पे बनता है, ठीक है। ठीक है। और ऑटो स्केलिंग, ऑटो स्केलिंग कवर करनी है, हाँ हाँ, तो बहुत जरूरी है। मौजूद है। हाँ ठीक है, वो मैं कर दूंगा सर, पहले ऑटो स्केलिंग का नेक्स्ट टॉपिक रखता हूँ, क्योंकि उसमें पहले थोड़ा सा फंडामेंटल्स ले लेना कि मींस लेट्स से आई एम रनिंग अ सर्विस, सो व्हाट ठीक ऑल है, थिंग्स आर देयर, ठीक है, फिर ठीक उसके है, बाद ठीक है, उसको स्केल कैसे करते हैं अगर जरूरत होती है ठीक तो। है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कूल है, ओके आई स्टॉप रिकॉर्डिंग। ठीक है।